Namaste, good evening, and hello to all our audiences. My name is Devika Chhibber Mehta, and I am the host of the talk show Awe, A Woman for a Woman, where we bring in women contributors of the society. In today's episode, we bring to you Sanyukta Banerjee, who is a versatile combination of leadership, courage, and inspiration. She has been a journalist and is currently working as a news broadcaster with All India Radio in Bhopal. So sometimes I want to imagine that as a woman in the 21st century, I'm so free. But is it? We are in the forward century, yet it is very difficult for a woman to break the taboos of the society, one of which is becoming a single mother by choice. So, hello, Sanyukta. I am in Hi. awe of your decisions and have tried to explain your life here in few lines. But please let it all come straight through the horse's mouth. I mean, your life, how you've been doing, and all the other things. Please tell our audience. Sure, Devika. First of all, thank you, and a very warm welcome to all who are watching and listening to this. And thank you for providing me this platform as well, Devika. Well, talking about me, as you just said, that I'm a journalist. I work for All India Radio News. I have been into news for more than 15 years now, professionally. Otherwise, I was, and every journalist, you'll completely agree with me that every journalist actually gets into news from the very basics, when you're in school or in college, when you actually start fascinated about this whole uh, news things, you become a journalist. So professionally, I'm into this field for past 15, 16 years. Well, as you said, that I chose to be a single mother. And yes, about those taboo things, and even if we are in the 21st century and we are so-called forwards and etc., the things stay the way they are. There are people who don't agree or who don't appreciate people breaking those traditional frameworks. So we are all guarded and guarded by the thick walls. uh, but मुझे हमेशा से ये लगता है कि नेचर ने हमें इंसान बनाया है, and all the discrimination about gender, being female, male or third gender, is about their reproduction. जो भी differences हम में है as a female or a male or a transgender, वो हमारे reproductive process को लेकर वो differences है. Otherwise we are all equal. And I would like to quote about Osho. I once read, he somewhere wrote that, हम असमान हम असमान नहीं है, हम भिन्न हो सकते हैं. We are different in our own ways, but you should not discriminate us on the basis of our gender. But again, the truth is कि हम जिस society में है, जो society हम ही ने बनाई है, उसमें हमने इतनी सारी बेड़ियां, इतने rituals, इतने traditions form कर दिए हैं, और वो सब पितृसत्तात्मक है, patriarchy is overpowering. And आपका वुमनहुड, आपका फेमिनिज्म, वो सब अभी भी या तो बिल्कुल ही दरकिनार कर दिया गया है, और people try to see you from a different eye if you claim to be a feminist or something like that. So I took the decision of being a single mother. Yes, and biologically I became mother a few months back, exactly almost 5 months back. बट सिंगल मदर बनने का जो थॉट है वो मेरे माइंड में बहुत पहले से था, क्योंकि मैं अडॉप्ट करना चाहती थी. तो दैट वे, बिकॉज आई वाज नॉट मैरिड और आई वाज डिवोर्स, तो टेक्निकली अगर तब भी मैं अडॉप्ट करती तो मैं सिंगल मदर ही होती. तो सिंगल मदर बनना मेरे ख्याल से उतना बड़ा टैबू ब्रेक करना नहीं है. हमारे आसपास बहुत सारे सिंगल मदर्स हैं. We have so many examples of people who have adopted kids, and Sushmita Sen, of course, is one of them. बट या बहुत कॉमन नहीं ऐसा सुनाई देता. हालांकि अगेन आई एम नॉट द फर्स्ट, बहुत सारे लोगों ने ये किया हुआ है कि कोई बायोलॉजिकली सिंगल मदर बने थ्रू स्पर्म डोनेशन एंड अदर टेक्निक्स, व्हाटएवर इज अवेलेबल. सो दैट वे जब मैं इस प्रोसेस से गुजर रही थी तब मुझे भी नहीं पता था कि मैंने कुछ ऐसा पाथ ब्रेकिंग किया है, और मुझे अभी भी नहीं लगता मैंने ऐसा कुछ किया है. बट हाँ, जब लोगों ने मुझे कहा कि जो आपने किया है वो बहुत अलग है, और टेक्स करेज टू डू समथिंग लाइक दैट, देन आई वाज लाइक, ओह रियली? बट द पीपल अराउंड मी नेवर मेड मी थिंक लाइक दैट, because they were very normal. They were my family, my friends.
they were very normal. They were very supportive. They held my back throughout. So I think that was a very general thing that I did. So I totally that way, agree I with mean, you. But the thing is, actually जिस चीज की knowledge लोगों को नहीं होती है, अक्सर लोगों को उस चीज को समझने में थोड़ा देर लगती है या कई बार वो समझ ही नहीं पाते हैं. So can we actually agree. talk about the treatment? Like we had our previous conversations, and I actually went through and read about कि वो हमने usually मैंने भी I'm also a mother of 10-year-old और मैंने अभी तक अपनी लाइफ में IVF ही सुना था. I had not heard Right. about ICI and IUI. So our audiences, basically ICI is intracervical insemination and IUI Yes. is intrauterine insemination, if I'm right. 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 IVF बहुतों ने Yes. सुना था कि वो क्या process है and you know the embryo Hmm. is taken outside and वो lab में process होता है. But for our Hmm. audience, ICI and IUI is basically taking the sperm and actually inserting it in the vagina. Basically, that's Right. what I Right. understood. So I would like to understand more about it. Like, what's the cost of the? I mean, is it too expensive? Mm-hmm. Because other mothers or Okay. other females who will actually see this, they would probably want to know that what is ICI, and I mean, how you actually decided to go for it. Yes, I'll answer the later part first, and then I'll go with the technicalities of ICI. So the thing is that, as I told you, I registered myself for adoption of a baby girl way back. I think I waited for 6, 7 years in a row to become a mother and to adopt a baby girl. But that didn't happen for some reason. Okay, leave that. I'm still hopeful that maybe in the future I'll be able to adopt a baby girl through that particular process again. But anyways, so in November 2020, almost a year and a little over has passed. So in November 2020, I got a call from Kara telling me that my registration with them is expiring and that I need to re-register myself. Re-registering means that you'll have to go through the whole process of economical survey, home survey, submitting the documents, the affidavits, etc., etc. Being a single potential parents or a person who's trying to be a parent of a girl, you need to face more challenges than being a couple. So even in that format of adoption or that procedure, I was going through a lot, facing a lot, again, getting references and rejecting the referrals, etc. That was very, very devastating emotionally as well. So when they told me that my registration is going to, it will become null and void in coming couple of months and I need to re-register myself, I was very, I felt very bad and I thought that maybe I should not just rely on this and I should think of some other ways because I feel that to be a parent, you need some amount of time with you. I mean, when I got that call, I was 37, and I knew that if for another maybe 2 or 3 years, if this doesn't work or I'll fail to be a mother, then maybe I will give up the whole idea of becoming a mother because then I'll cross 40. And if I calculate it technically, because you're trying to be a single parent, so you have more responsibility, no one to look after the kid if you are not there or something happens to you. So I did the calculations and I thought that I should do one, uh, you know, full attempt with all the might to get it done. Otherwise, I'll just give up on this. तब फिर मैंने फाइंड आउट करना शुरू किया कि और क्या ऑप्शंस हो सकते हैं जिससे मैं माँ बन सकती हूँ. तो जो सबसे पहला ऑप्शन मेरे पास आया था दैट वाज सरोगेट. You can go for a surrogate mother. But again, surrogacy is a very, very, very expensive thing. It's, I mean, no way less than 20 lakh, so from 20, 30, 50, it can just go up and up. So surrogacy was definitely not going to be um, um, happening in my circumference. That was one option crossed out. Then I was left with IVF. As you said, IVF, we are very used to of that particular term, and we know as a layman that it's test tube baby. They will infuse the egg and the sperm, and they'll infuse it, and then they'll insert the whole thing inside the female body, and then the person will
become a biological mother of that particular child. So I was also, I was aware of that term. So I thought that maybe IVF is the right technology for me. So once I was having a conversation with my family doctor, and he told me that why are you going for IVF? You should rather go for other options, because if you are fertile, then you can adopt ICI and IUI. And that was the time I came to know about these words. Then, as you did, I did my own homework. I Research. tried to Google, yeah, did my part of R&D on ICI and IUI. And that's when I went to the doctor and asked that, which process will fit into my budget as well as will be good for my body and all. So ICI is what I chose or I went for. So ICI budget wise is very, very comparatively budget friendly comparative to IVF or other processes. So IUI, ICI almost the same. ICI अगर आप करते हैं तो आपको बेसिकली यू आर पेइंग फॉर द स्पर्म्स बिकॉज डॉक्टर्स जिसने स्पर्म डोनेट किया ऑफ कोर्स उनको पे किया होगा देन उस स्पर्म को स्टोर करने के लिए यू नीड प्रॉपर स्टोरेज एंड एक्सेट्रा उसको उसके लिए आप पे करते हैं प्लस आप कुछ टेस्ट अंडरगो करते हैं उन टेस्ट के लिए आप पे करते हैं तो कुल मिला के उसका खर्चा 20,000 30,000 बहुत हुआ तो 50,000 बिकॉज इन मेनी केसेस वन शॉट में नहीं होता तो आपको हर महीने एक पर्टिकुलर साइकिल पे वहां जाना होता है टू गेट द शॉट्स टू गेट दी स्पर्म्स इंजेक्टेड इनसाइड योर सर्वाइकल तो इस तरह से वो कॉस्ट थोड़ा बढ़ सकता है बट इन माय केस लकीली फर्स्ट शॉट में ही हो गया था सो इट कॉस्टेड मी including the ultrasound etc somewhere between 30 to 40,000. So it was not very over the budget. So I opted for ICI. It worked for me, and yes, I was absolutely unaware of that word before that. So I can understand when people ask me the same question. कि ICI तो हमने कभी नहीं सुना. IVF we are very it's a very heard of word. So But there that are was the other same with me as methods. well. Yes, there are other Yes, methods yes, there also. are. Yes, yes, yes. So I think the problem is that we are not aware of other procedures. So when we think, okay, let's talk about it, then we get to know about it. एक और चीज मुझे नहीं पता थी और अगर पता होती तो शायद मैं बहुत पहले ये कर लेती वो थी मुझे आई मीन पता तो था बट उतना शायद मुझे एग्जाम्पल्स नहीं मिले थे वो ये था कि क्या बायोलॉजिकली सिंगल मदर बना जा सकता है हमारी सोसाइटी में तो लॉफुली यस बना जा सकता है अगर ये मुझे पहले और अफर्मेशन के साथ पता होता तो मैं उसके लिए और पहले ट्राई करती नहीं पता था तो शायद इतना डिले हुआ तो जब मुझे पता चला कि कारा से मेरा रजिस्ट्रेशन नल एंड वॉइड होने वाला है तो मैंने जब रिसर्च किया तो मेरा पहला पार्ट ऑफ रिसर्च यही था कि ये कानून उसको लेकर क्या कुछ कहता है so that was my first R&D where I did my R&D. So then I was like, okay, if it's legal, then let's do this, then let's go for it. That's an amazing phase of your life, and I'm actually honored to hear about it. So you have a little boy. I think Hmm. he was born in August, so he's Yes, still yes. somewhere Almost he'll around turn 7 months. 5 tomorrow. Oh, so what's his name? His name is Shashwat. Shashwat means everlasting, perpetual, and his nickname is Miku. We call him Miku at home, and of course with other various That's love names. cute. So yeah. So, I mean, we have always been hearing about the types of parenting, the helicopter parenting, there's the dolphin parenting, and there's so many. So, what sort of parenting are you planning to go forward with as a mother? Honestly speaking, Devika, I have not thought anything about it. मुझे लगता है कि फॉर श्योर मैं वो टिपिकल सैक्रिफाइस वाली मदर नहीं बनना चाहती मुझे लगता है कि जब आप कुछ चीज सैक्रिफाइस बिकॉज वी ऑलवेज प्रिज्यूम ना हमारे जो फिल्मों ने भी या जो हमने लिखा पढ़ा है उसमें भी माँ की जो तस्वीर है वो बिल्कुल त्याग की मूर्ति है शी इज द Compromising, वन हु sacrificing. sacrifices compromises sacrifices everything for her kid and
compromise in so many ways. I think adjustment मैं करूंगी, and of course सिर्फ मैं नहीं, उसे भी करना पड़ेगा मेरे साथ, कर भी वो रहा है मेरे साथ, क्योंकि एक सिंगल पेरेंट वर्किंग पेरेंट के साथ ऑफ कोर्स जेल करना बच्चों के लिए भी बहुत मुश्किल होता है, आगे और मुश्किल होगा, बिकॉज नाउ ही इज नॉट सो अवेयर, और उतनी उसमें समझ नहीं है, बहुत छोटा है। तो मुझे लगता है कि एडजस्टमेंट्स मैं करूंगी, वो उसको भी करने होंगे, लेकिन और कुछ मैंने नहीं सोचा है। एंड आई थिंक जैसा रोज जैसा मुझे मिलेगा, आई थिंक आई जस्ट गो फॉर इट, आई गो विद द फ्लो। तो मैंने बहुत कुछ सोचा नहीं है, और मैं सोचना चाहती भी नहीं हूँ, क्योंकि जब आप बहुत सोच लेते हैं ना और वैसा नहीं हो पाता तो बहुत फ्रस्ट्रेशन होता है। तो आई थिंक आई जस्ट लीव इट, कि जैसा टाइम होगा आई जस्ट गो विद द फ्लो। But sometimes, yeah, I totally agree with that. I totally agree. But usually, that is my also personal experience, and my friends and other family members have also experienced the same. कि probably जो हमारे parents ने हमारे साथ जो behavior या treatment रखा, there are certain things probably which we want to carry forward with our kids, and there are certain treatments which we don't want to carry forward. So one, of course, is the sacrificing and compromising part we don't want to carry forward. I think our Right, generation yeah. is like that probably. Ki we don't want us to be sacrificing everything for them. We want our life, our personal space as well. Actually, yeah, So yeah. anything which probably you want to carry forward from your mother to your child. See, you'll also agree with that, even if you are age-wise very younger to me, still, we in our times, the parenting used to be very different. It used to be more strict. Um, this, friendly behavior between the parent and the children was not that common, which is very common these days. I mean, हमारे टाइम पे शायद जैसे ही आप 18 प्लस के होते थे, तब थोड़ी बहुत आपकी उस तरह से बात हो पाती थी, इनफॉर्मल बात होती थी पेरेंट्स से। अदरवाइज पापा को कोई चीज पता चलेगी ये सुन के तो पहले ही रोना आ जाता था, बिकॉज अदरवाइज पापा लोग डांटते नहीं थे। पर अगर डांट उनसे पड़ने की संभावना होती है तो हम सब की पहले ही उनका सिक्योरिटी गुम हो खौफ जाती रहता थी। था हमेशा। बहुत खौफ रहता था, मतलब वो फादर वर्ड इटसेल्फ इतना स्केरी होता था कि बाप रे, मतलब पापा आने वाले हैं, पापा को आने दो, तो ये तो झेल ही नहीं पाते थे। तो मुझे लगता है बहुत पेरेंटिंग अब बदल गई है। Thankfully, my parents never discriminated between me and my brother. So that's one thing I have, inherited from my parents, and that I'll try to hand over to my kid as well. Secondly, they are, I mean, mostly क्योंकि मैं एक separated family से हूँ. My father was used to stay in a different place, and my mother used to take care of me and my brother. So still, I feel that मेंटल स्ट्रेंथ बहुत जरूरी है। तो एक फिजिकल वेलबींग तो जरूरी है ही, आपको मेंटल स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। एंड विद each and every day, the challenges, the survival criteria are getting tougher and difficult. तो उसमें फिजिकल वेलबींग कितना जरूरी है, आई थिंक मेंटल भी उतना ही या शायद उससे भी ज्यादा जरूरी है। तो एक ये चीज भी मैं अपने बच्चे को देना चाहूंगी। मैं चाहूंगी कि वो इमोशनल हो, सेंसिटिव हो, बट इमोशनल फूल ना हो, वो मेंटली स्ट्रांग भी हो, वो डिफरेंट सिचुएशंस के साथ सेल थ्रू करना भी जानता हो। एंड आई नो फॉर श्योर कि उसकी लाइफ भी बहुत आसान नहीं होने वाली है, क्योंकि अभी भी हमारी सोसाइटी में, स्पेशली बिकॉज आई हेल फ्रॉम, completely based out of Bhopal, right? And Bhopal is not a metro city, and अगर मेट्रो होता तो भी शायद उतना अभी भी एक्सेप्टेंस एक बच्चे को लेकर सोसाइटी में नहीं आई है जिस बच्चे के साथ उसके फादर का नाम ना जुड़ा हो, जिस बच्चे के बर्थ सर्टिफिकेट में फादर का नाम ना लिखा हो, उसे पता ही ना हो कि उसका फादर कौन है। तो उसे लेके एक्सेप्टेबिलिटी अभी नहीं आई है। आई होप आई फ्यूचर में, बट अभी तो नहीं है। तो मुझे पता है कि उसकी लाइफ बहुत इजी होने नहीं वाली है। मैं चाहती हूँ कि उस लाइफ को, डेफिनेटली मुश्किलें आएंगी, आनी भी चाहिए, वरना लाइफ का मजा ही कहाँ रहेगा। तो मुश्किलें आए, लेकिन वो उससे सेल थ्रू करना जाने, तो वो उतना मेंटली स्ट्रांग हो। तो ये तो चीजें मैं डेफिनेटली चाहूंगी। लेकिन एज अ किड मैंने बहुत मार खाई है, और मैं नहीं चाहती कि वो उस पे मैं कैरी फॉरवर्ड करूं। और मैं एकेडमिकली, आई मीन एकेडमिकली आई वाज गुड, लेकिन मैथमेटिक्स में आई वाज वेरी 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 बैड। आई वाज हॉरिबली बैड। तो मैं नहीं चाहती कि उसकी, जिस तरह से मैंने उसकी वजह से, मैथ की वजह से इतनी मार और इतनी डांट खाई है, वो उसको कभी मिले।
So I'll be a strict parent, I know, but marungi, I think, nahi. But these are the few things that I'll, No, I'm carry sure he's forward. going And to हाँ, I take mean, मुझे ये भी लगता है because mother ने ही मम्मी ने ही मुझे और मेरे भाई को अब संभाला है। लेकिन मुझे लगा कि हमें संभालते संभालते वो अपनी लाइफ भूल गई, उनके कोई फ्रेंड सर्कल नहीं है, उनका कोई अभी भी इमोशनली शी इज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन मी और माय ब्रदर। मुझे लगता है उनको वेंट आउट करने के लिए जो एक स्पेस है वो उन्होंने क्योंकि कभी ढूंढा ही नहीं, वो पूरी जिंदगी हम पे लगा दी। I won't do that. Right. No, I'm sure he's going to turn into an amazing man. With the mother you are Thank and you you so much. sound the way you sound, so he will be. I'm sure. And you're not alone. I'm sure आपके friends and family members, and there would be so many people Yeah. to support you also. I mean, the times are changing. Yes, yes. There, अगर थोड़े demerits हैं society में, तो थोड़े merits भी हैं. People are changing. Bilkul. So, the work, are you on a break, Abhi? Yeah, you are continuing your Yes, work. I'm on my maternity leave, but next month say I'm resuming my work, so very few days So are you're going, remaining. I Otherwise, mean, I'll your get back. mother is staying with you there. I mean, भोपाल में आपके पास आपके friends, family हैं. See, my mother is in Bhopal, but we don't stay together. She's like half an hour drive away from my place. So she comes over maybe twice every month for a couple of days. So right now she is here. So I'm the lucky girl for 2 or 3 days now. But But otherwise, मतलब I going manages forward, with the my baby. work-life balance, I mean, work and family and the kid, वो पूरा balance आप maintain करने के लिए, how are you going forward with that? See, Abhi, yeah, I'm on my maternity leave, of course, but otherwise, I'm continuing my freelance work. I started my work after 15 days of my C-section. So, for events, I'm traveling as well. I've resumed my traveling schedules, and I'm working on my scripts, on my voiceovers, etc. So, when I'm working from home for those freelance assignments, it's okay because he sleeps a lot now because he's too tiny, so I manage this somehow. But when I'm going out at places where I can take him, I do that. I'm driving from. I resumed driving in 7 days after my C-section, and my baby started traveling with me. He has his own car seat, etc. In way before he was 20 days old. Hmm. So I try to take him if that's possible. Otherwise, I have had a nanny for him. So she'll be coming from 1st of Feb because I got to resume my work. So that way, she'll be there. I'm And sure it will be manageable. Of so, course, if you want and to, even if, yeah, even if with couples also, if both of them are working and they are living in a nuclear family, then they are dependent on someone who hmm. will help them out with that. So with the CCTVs and whatever what the usuals we do. So we all, I'm hopeful that will I'll be able to sail those through. Oh, wow, that's Sanyukta as a mother. I mean, you sound so amazing. So now, if I come to Sanyukta as a journalist, I mean, Hmm. what are your you have been in the field for 13, 15 years, if I heard it right. Hmm. So Yeah, yeah. how do you see journalism changing? How do you see, I mean, a long time back, of course, there were news readers, there was print journalism, then there was digital journalism. Now we are hearing about artificial intelligence and journalism. So, in fact, that is Yes. my PhD topic research as well. So, Oh, there are new wow. topics coming up. So, how do you see Hmm. journalism changing? And especially in the political situations, like now the elections are coming and so much is happening around. So, how do you Hmm. see journalism changing? See, the spirit remains the same, I guess. When we, uh, as a, aspiring journalists, when we were studying and trying to understand the different aspects of journalism, the spirit was the same. Elections used to bring a smile on our face, and it was so much of fun. And even today, election or any big happening actually brings a smile on our face. And the irony is, you are equally aware of it, that every bad is actually good for us. Hmm. So we live that.
So as a kid, when I was growing up, I used to read a lot of Tavleen Singh. And Tavleen Singh, as every journalist do, that's our basic, is to question the one who's in the power of the government, actually. So Hmm. Tavleen Singh used to write a lot against the government, which used to, really inspire me, or I really appreciate her for her courage. I was very small. I guess I was in seventh or eighth standard when I used to read Tavleen Singh. Uh, so that's how it all started. That's how I got that thing into myself. So I feel that one big change that we are seeing these days is that we have stopped questioning. We have stopped questioning the person who's in the power, of course, because we are getting our paychecks from them. Of course, any organization ever will get paid by the government ads more than the privates. So that's definitely one of the factors. But nowadays, questioning has become really that's one big thing. And nowadays, even mm, the hatred, the negativity that we spend very often through news channels or through social media news stuffs is one thing that I would like to avoid or not see. So I think yeah, that is one thing. I mean, being a journalist myself, मुझे news देखना हमेशा से बहुत पसंद था. लेकिन last year when I was pregnant and the second wave of COVID was here and there was negativity everywhere, apart from the negativity through the coming from the news of whatever was happening, it was also about all the rumors or fake news or fake data that were, getting sailed. Hmm. So वो मेरे लिए बहुत बड़ा turn off था, and actually I stopped reading newspapers and watching news channels during that particular time for 6 7 months. I guess I was absolutely unattached. I just detached myself from everything. Though I was working, so that was the only time that I was into it. Otherwise, I just cut off myself. So that was important for me. I think that I mean, अगर ये 20 साल पहले हुआ होता तो शायद मैं इस तरह से खुद को डिटैच नहीं करती न्यूज से, क्योंकि तब न्यूज इतना, एक तो इतना 24/7 होता भी नहीं था, कोई न्यूज चैनल्स पे तक चिल्लाता भी नहीं था, and everyone was not so opinionated about everything that's going around. There was not so much of hatred or negative vibes coming from each and every one. तो मुझे लगता है वो एक बहुत बड़ा change हुआ That as a freedom layman of also, I feel. expression has changed into freedom of deliberations and delusions, I think. Actually, So, actually, the exactly, whole meaning of freedom of has expression changed has gone for a thoroughly. toss. So, Yes. also being a female into journalism, abhi bahut hai. Mm-hmm. There have been last 10 years or so, many females have entered into the field. And yes, Uh-huh. many have made their exit also, but some have sustained the roles and the responsibilities. So, what would Mm-hmm. be your message to from being a Wonder Woman to being a female journalist, Wonder Mom, and I mean, so many adjectives to your name, I would suggest. But what would be Mm-hmm. your message to the females into journalism who are probably looking forward to? It's not just getting on the screen. There is much more Mm-hmm. into journalism. Yeah, yeah. As a woman, Definitely. as been a There's journalist, your message to upcoming generation probably. see, I feel that there is a quote that woman is like a reed that bends at every breeze but breaks not even in the tempest. तेज तूफान आता है तो भी जिस तरह से कमल के फूल की जो रीढ़ होती है, जो डंडी होती है, वो तेज हवा के झोंके में भी झुकती है, बहुत बार झुकती है, लेकिन हल्की हवा में भी झुकती है, लेकिन तेज तूफान में भी वो कभी टूटती नहीं है. तो एक औरत वैसी ही होती है, वो बहुत स्ट्रांग है, वो किसी भी फील्ड के लिए बहुत स्ट्रांग है, केपेबल है, उसमें लीडरशिप क्वालिटीज है. बट द सैड पार्ट इज कि इनफैक्ट क्योंकि हम दोनों ने एक ही यूनिवर्सिटी से वी हैव पास्ड आउट एंड वी हैव डन आवर मास्टर्स इन जर्नलिज्म फ्रॉम द सेम यूनिवर्सिटी, यू मे हैव आल्सो नोटिस, जब मैं उस यूनिवर्सिटी में गई, क्योंकि वो प्रोफेशनल था, उससे पहले तो हम लोग बी कॉम, बीएससी, इस तरह के कोर्सेज कर रहे थे, तो वहां पे ऑलमोस्ट जो जेंडर रेशियो है वो
बराबर होता था, थोड़ा कम ज्यादा होता था। लेकिन जब मैं जर्नलिज्म करने गई तो मुझे पता चला कि मेरे जो इमीडिएट सीनियर्स हैं वहां पे सिर्फ 3 लड़कियां हैं और शायद 25 लड़के हैं। मेरे टाइम पे एक रेवोल्यूशन आया था मे बी, तो देयर वर लाइक ऑलमोस्ट 40-60 टाइप का रेशो था। तो सब लोग बड़े दे वर वेरी अम्यूज्ड एंड अमेज्ड कि बाप रे, इस बैच में इतनी सारी लड़कियां आई हैं जर्नलिज्म करने। और उससे और अगर मैं अपने सुपर सीनियर के बैच की बोलूं तो वहां कुछ कुछ बैच ऐसे थे जहां लड़कियां थी ही नहीं। मतलब अगर आप प्रोबेबिलिटी देखेंगे तो अगर मैं कोर्स करने जा रही हूँ तो अगर वहां पे 5 लड़कियां जा रही हैं तो हो सकता है उसमें से 3 लड़कियां या 2 लड़कियां जॉब करेंगी, और हो सकता है उसमें से एक आगे तक जाएंगी, क्विट नहीं करेंगी किसी भी रीजन से। तो उस प्रोबेबिलिटी से भी अगर आप चले तो लड़कियां बहुत कम मार्केट में ही जा पाती थी। उसमें सस्टेन करना और आगे तक पहुंचना तो बहुत बड़ी दिक्कत है। दूसरी बात है लीडरशिप की। लीडरशिप या जो एडिटोरियल पोजीशंस होते हैं, बड़े पोजीशंस होते हैं, वहां पर लड़कियां हैं, बट अगेन फॉर देम देयर इज अ ग्लास सीलिंग। आप माँ बन गई है, ओ माय गॉड, आपको तो मैटरनिटी लीव चाहिए, देन यूल गेट योर चाइल्ड केयर लीव। तो एनीवेज उसके पास उसको छुट्टी बहुत चाहिए होगा, बच्चा बीमार होगा तब उसको छुट्टी चाहिए होगा। तो जब आप रिक्रूट करते हैं या प्रमोट करने की जो लिस्ट चॉक आउट करते हैं, उसमें भी आप फीमेल्स को बहुत नीचे कर देते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसकी दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी है। तो मी आई थिंक जब कोई एक माँ बनती है, अनलाइक इन माई केस, तब कोई एक पापा भी तो बनता है, तो वो भी तो वर्क कर रहा है। इफ यू आर नॉट seeing him from a different eye, don't look at the mother from a different eye. Use the same spectacles, please. I mean, we all are, and now women have to work really hard वो glass ceiling तोड़ने के लिए। she she works really hard। मतलब अगर एक मेल जो है उसको जितनी मेहनत करनी है, हमें शायद उससे 5 गुना से भी ज्यादा मेहनत करनी होती है सिर्फ उस स्टेज पे पहुंचने में और वो सेम पे चेक हासिल करने में। मतलब कई बार ये होता है कि मैं और मेरा एक काउंटर पार्ट अगर हम एक ही पोजीशन पे है तो मेरी सैलरी अलग होगी, उसकी अलग होगी, और उसकी हमेशा जो है बढ़ के होगी, मेरी कम होगी, बिकॉज दे विल हैव सम प्री डिटरमाइंड नोशंस इन देयर माइंड whenever they set the book. So I think that way थिंग्स आर चेंजिंग, और ये तभी बदलेंगी जब हम बड़े बड़े पोजीशंस पे होंगे, हम डिसीजन मेकिंग पोजीशंस पे होंगे, जो अभी हम बहुत कम है। तो जब हम डिसीजन मेकिंग प्रोसेस पोजीशंस पे होंगे तो शायद हम इन चीजों को समझेंगे। देविका, अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम है तो मैं एक एग्जाम्पल कोट करना चाहूंगी। Sure, ma'am. Sure, please. So when I think last year, President of India was an MP. He came to Jabalpur at the Judicial Academy for an opening ceremony of Directors Retreat, and I was hosting the whole event. So उसके बाद एक preliminary session थे जिसमें Chief Justice from various states were there, और Supreme Court के भी senior judges were there, and they were discussing. एक senior judge from Karnataka High Court was there. She was a lady, और उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया कि जजेस का जो प्रमोशन है वो ओथ टेकिंग से होता है। फॉर एग्जाम्पल, यू एंड मी got our promotions or blah blah days, then we'll go to the oath taking, and from there our seniority will come into effect. Okay. उनके यहाँ एक लेडी was pregnant. She was about to deliver her baby on that particular, I mean, अब कोई भी अपना बेबी किस दिन डिलीवर करेगा ये बहुत उससे नहीं कह सकता फर्म होकर। तो वो कहीं ना कहीं उन डेट से क्लैश करने के चांसेस थे। तो उस लेडी जज ने जाके कहा कि अगर मैं ये ओथ सेरेमनी नहीं अटेंड कर पाऊं सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे बेबी डिलीवर करना है तो क्या होगा। तो चीफ जस्टिस ने कहा, यू विल लूज योर सीनियोरिटी। व्हाई? Because you'll have to deliver your baby, and we are not sure whether you'll be able to deliver that baby before or after, so we can't change our dates. Now the problem is कि हम जब बुक्स बना रहे थे नियम कानून के, तो हमने कभी ये कंसिडर किया ही नहीं कि वुमेन्स भी बड़े बड़े पोजीशंस पे हो सकती है, क्योंकि किसी वुमेन ने कभी वो बनाया ही नहीं। डिसीजन मेकिंग हमेशा मोस्टली मेल्स के पास रही। तो उन्होंने जो भी सेट, उनको लगा कि हाँ ठीक है, एक दिन होगा जिस दिन सब लोग आएंगे, ओथ लेंगे और चले जाएंगे। उन्होंने ये नहीं सोचा कि अगर एक महिला वहां पर होगी तो हो सकता है वो उस दिन माँ बनने वाली हो सकता है उसको कुछ और दिक्कतें हो। तो अगर वो ना करे तो क्यों वो सीनियोरिटी हासिल करने से चूक जाए। तो इसको लेके जो दूसरे फीमेल जजेस थे उन्होंने काफी विरोध किया, और फाइनली जो चीफ जस्टिस ऑफ कर्नाटका है उनको ये
थोड़ा कंसिडर करना पड़ा, और उन्होंने कहा कि देखो मैं ओथ टेकिंग की डेट तो नहीं बदल सकता, मैं सिर्फ इतना करूंगा कि अगर वो हॉस्पिटल में भी होगी तो मैं हॉस्पिटल जाऊंगा उसका ओथ सेरेमनी कराने। तो इससे क्या होता है कि जब, ठीक है, हो सकता है बुक्स में आपके लिए चीजें नहीं लिखी गई हैं, तो फर्स्ट ट्राई टू बी देयर सो दैट यू आल्सो गेट द चांस टू राइट इन दोज बुक्स। सेकंड, अगर नहीं भी लिखा गया है तो प्रोटेस्ट करो ताकि जो लिख रहे हैं वो उसको बदल सके। फाइनली दैट लेडी टुक हर ओथ एंड उनकी सीनियरिटी बरकरार रही। तो सिर्फ इसलिए पीछे मत हो जाओ क्योंकि आप एक औरत हो। So I So you think need to that's the fight only for your message. cause and your whatever expressions you want to put up to. We need to fight. Yes, yes, We definitely. always fight and I Definitely. think हाँ मतलब वो रिबेल एटीट्यूड हमारी जनरेशन या हमसे पहले वाली जनरेशन ने किया है, तो probably we are going to leave something for the other generation, something better, something more progressive, I guess. So यस यस डेफिनेटली। तो मुझे लगता है जब ये होगा तो, और बहुत सारे नोशंस थे जो अब टूट रहे हैं। जब मैं आई थी तब लोगों को बड़ा सरप्राइज लगता था कि अच्छा तुम्हें स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, वरना लड़कियों को तो स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट ही नहीं होता। वो लड़कियों को नॉर्मली हार्ट बीट एंड यू नो सॉफ्ट बीट्स दे देते थे। उनको लगता था कि क्राइम जर्नलिस्ट लड़कियां नहीं हो सकती, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट लड़कियां नहीं हो सकती, व्हिच इज अ मिथ। आई थिंक गर्ल्स आर एवरीवेयर, दे आर डूइंग सो वेल, एक्स्ट्राऑर्डिनरीली वेल। सो पीपल शुड, एक तो ये नोशन ना बनाओ कि हम ये कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते। वी हैव प्रूव्ड आवरसेल्व्स एवरीवेयर, तो लेट अस डू इट। और जितने हमारे लीडर्स होंगे फीमेल, उतना ज्यादा आई थिंक वो लोग समझेंगे, और अगेन बुक्स लिखी जाएंगी हमारे लिए। of course, of course. I mean, I really look forward to. I mean, there are times are changing. We have been seeing so many changes, and even in my class, my department, there were many females who left out, but there were several who survived. And there's always that राइट। push, but we probably have been able to fight that push and grow forward. So. That was an amazing session, Sanyukta. From it was like, I mean, it was really inspiring. Not just a mother, but you're such an amazing woman and such an inspiring journalist. So thank you, Sanyukta. I really hope that your words will be quite inspiring for our audiences. And any message you want to convey to our audience at the end, Sanyukta? First of all, Devika, as we are concluding the whole session, thank you so very much. It was really a very overwhelming session for me as well. And regarding a concluding or parting message, I would just like to say that do not discriminate in any way. Don't discriminate in the name of gender. Don't body shame. Don't discriminate or do any kind of racism in the name of color, or caste, or creed, or you're thin or you're fat or you're whatever. We are human beings, you know. नेचर ने हमें किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया, उन्होंने हमें दे दिया इतना सुंदर नेचर, इतनी सुंदर लाइफ मिली है। जस्ट लिव इट, जो जो करना चाहते हो सब करो, और एक ईमानदार कोशिश अपने सपने को पूरा करने की जरूर करो, विद कीपिंग इन माइंड द मोटो लिव एंड लेट अदर्स लिव। तो आप जो भी कोशिश कर रहे हो उससे दूसरों को बहुत ज्यादा तकलीफ ना हो, तकलीफ तो सभी को होती है। तो इसलिए आई थिंक अपनी लाइफ एंजॉय कीजिए, और अपने साथ साथ जो दूसरे कर रहे हैं उसको भी रिस्पेक्ट के साथ देखिए, और किसी भी तरह का जब आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे तो ऑफ कोर्स बहुत बहुत खूबसूरत जिंदगी हमें मिली है, तो उसे हमें पूरा अपना बेस्ट देकर जीना चाहिए। बिल्कुल संयुक्ता, वो जिद अपने मुकाम को हासिल करने की, वो जिद कभी नहीं छोड़नी चाहिए। और हाँ, ऑफ कोर्स यस, साइड बाय साइड हमें औरों का भी ख्याल रखना चाहिए, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे वी आर ह्यूमंस। वो मेल हो, या फीमेल हो, एक्चुअली या कोई और जेंडर हो, वी ऑल आर ह्यूमंस एट द एंड. So thank you एब्सोल्युटली once करेक्ट। again, Sanyukta, for this थैंक amazing यू। session. And for our audiences, we'll come back to you next week with some another woman contributor, another inspirer. Thank you so much. Have a good day. थैंक यू।